अस्सलाम स्टूडेंट्स, अब हम लेंथेनर सीरीज पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे इसमें लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में क्या आता है, जो उसका एटॉमिक रेडियस एंड द एनिक रेडियस ऑफ ट्राई पॉजिटिव लेंथेनाइट आयन, that is tripositive ion, that is M3 positive ion, shows a steady and a gradual decrease in moving from lanthanum to lithium, that is La to Lu. Although atomic radii do not show some irregularities, but ionic radii decrease steadily from La to this to this. The steady decrease the steady decrease in the size of lanthanide atoms and ions with increase in atomic number is called lanthanide contraction. What is called? The steady decrease in the size of lanthanide elements, atoms and ions with the increase in this atomic number is called lanthanide contraction. Now, cause of lanthanide contraction. As this atomic number increases in lanthanide series, for every proton in the nucleus of an extra atom goes to fill 4f orbitals. The 4f electrons shield screen each other from the nuclear charge quite poorly because of the very diffuse shape of the d orbital. Shape of the f orbital, not d orbital. किसकी वजह से? Because of the very diffuse shape of the f orbital. Thus, there is a gradual increase in the effective nuclear charge experienced by the outer electrons. Consequently, the attraction of the nucleus for the electrons in the outer motion increase as the atomic number of the lanthanide increase and the electron cloud shrinks. This results in gradual decrease in size of lanthanides with the increase in atomic number. अब कुछ सिमिलरिटी है इसमें, क्या जो सिमिलरिटीज है, फॉर एग्जांपल सिमिलरिटी ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आप देखेंगे जो एटॉमिक रेडियस ऑफ सेकंड रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, दे आर ऑलमोस्ट वो क्या होते हैं, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू दोज ऑफ द थर्ड. मतलब जो सेकंड क्या है, द रेडियस ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ जो एटॉमिक रेडियस है किसका, सेकंड रो ऑफ ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड रो ऑफ transition series, second of transition series, जो transition series of elements है, they are almost similar किससे, to those of third row of transition elements. Of transition element. For example, among the elements of the group 3, there is normal increase in size from scandium to yttrium to lanthanum. Scandium to yttrium to lanthanum. But after lanthanides, the atomic radii from second to third transition series do not increase as shown for groups 4 and 5. For example, मैं यहाँ पर दिखाऊंगी scandium. Scandium क्या है, 21 यहाँ पर, this 144 parts per mil, this is ये 3 ये 4 में आएगा titanium, that is 132 pm, and this is vanadium 25, that is 122 pm. This is 22, this is 23.
यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर यूजुअल इंक्रीज होता है इन साइज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप. अगर हम नीचे जाएंगे स्केरम से यूट्रम होगा यूट्रम 39, दैट मीन्स इट विल गो टू 180 pm है. अगर और जाएंगे नीचे लेंथनम दैट इज 57 हो जाएगा 187 pm है ना. ऐसे जब इनके here is the usual increase in size on moving down the group from second to third transition elements. From second to third and is cancelled by the decrease in size due to the lengthened contraction. Also a result of lengthened contraction, the second and third row of transition element resemble each other more closely than they do first and the second one. फिर इसके बाद आती है कि जो suppression of lengtheners. Suppression of lengtheners is also possible due to lengthened contraction. किसकी suppression भी possible है, that is possible due to lengthened contraction. As all the lengtheners they have a quite similar properties and due to this reason they are difficult to separate. इनमें similar properties and they are very difficult to separate. However, because of lengthened contraction, their properties such as मतलब solubility, ability to form complexes and etc. very slightly. This slight variation in properties is utilized in the separation of lanthanides by ion exchange method. For the variation in this basic strength of hydroxide, the basic strength of hydroxide decrease from hydroxide to lithium hydroxide. Due to the length and contraction size of M3 positive and decrease, and there is an increase in the covalent character in MOH bond. Thus, lithium hydroxide जो है is more basic, whereas MOH जो bond है that is least basic. अच्छा, फिर इसमें आते हैं यूजेस ऑफ लेंथेंड. जो हम लेंथेंड किसके लिए, लेंथेंड प्योर मेटल्स हैव नो स्पेसिफिक, किसके लिए हम यूज़ करते हैं. एक मतलब फॉर एग्जाम्पल मेटल जो है एलॉय विच कंटेन्स रेयर अर्थ मेटल, इसमें हम जो आपकी यूजेस में हम किस में यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसमें मैग्नीशियम मिक्सड विद 3% chemical is used in making of jet engine. इससे बहुत सारे यूज हैं. लेंथ एंड सॉल्ट्स हैव रिसेंटली बीन यूज्ड इन लेजर्स, किसमें लेजर्स में यूज़ की जाती है. एंड नियोडियम जो है ऑक्साइड डिजॉल्व इन सिलीनियम ऑक्सोक्लोराइड सर्व एज अ पावरफुल दिस लिक्विड लेजर. तो और जो मनी लेंथ एंड ऑक्साइड दैट यूज्ड इन फॉस्फोरस इन that used at phosphorus in colored tubes, lanthanide oxides. और भी कुछ है तो आपको देख सकते हैं. फिर इसके बाद है actinides. actinides में क्या आता है. actinides जो है the series of chemical involving the filling of, इसमें क्या involve होते हैं, filling of 5f orbitals. What 5f orbitals? Though not in thorium, is called actinide series or actinides or actinodes. They follow actinium, that is 89, and include elements from thorium, that is Th 50, to lawrencium, that is Lr. and lawrencium का है शायद 103, and lawreum, and for the chemistry of which actinium is the prototype. The chemistry of actinide is more complicated due to the existence of greater range of oxidation states for these metals. Moreover, all these metals are radioactive, क्या है, and therefore their जो accessibility है for laboratory investigation is limited. Radioactive तो इसकी जो they are limited. The elements beyond uranium are all man-made elements and are made by nuclear chemical melts. अब इनका जो ये है इसका
सिम इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोजिशन एक्टिनेटम से, वो आपको मैं ऐसी टेबल भेजूंगी, क्योंकि क्या क्या है दैट आई विल शो यू अभी जस्ट नाउ। इसमें आप देख सकते हैं कि ये इसमें एलिमेंट मैंने लिखे, इसमें जो एक्टिनम है, थ्योरम है, या ये प्रोटेक्टियम है, यूरेनियम है, नेपच्यून है, प्लूटोनियम है, अमेरिकियम है, क्यूरियम है। ये आप खुद देख सकते हैं कि इसमें क्या है। एटॉमिक नंबर 89 से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर नीचे 96, और जो भी इसमें जो है वहाँ से सिंबल और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज 7s, दिस इज 5 F14, 6d1 एंड 7s2। ये मैंने लिखे हैं, आप खुद भी नोट कर सकते हैं। ये मैंने अलग चार्ट एक बनाया, अलग अलग टेबल्स का। अब फिर ऐसे कंपेरिजन ऑफ लैंथेनाइड एक्सिस, इसमें क्या क्या मतलब कंपेरिजन है। जो बोथ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स दे आर इन्वॉल्विंग फिलिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल्स, मतलब ये इनमें कंपेरिजन है। एंड दे शो सिमिलरिटीज इन मनी रेस्पेक्ट। क्या क्या, बोथ शो मेनली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 4, दोनों में दिखाते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ +3। बोथ और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड रिएक्टिव, ये दोनों एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, दोनों इनमें सिमिलरिटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एंड आर वेरी रिएक्टिव भी है। दे शो मैग्नेटिक एंड सेपरेट स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज। Actinides exhibit actinide contraction like lanthanide contraction show to lanthanides। अब इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, डिफरेंस ये है कि जो लैंथेनाइड से बिसाइड्स कॉमन ऑक्सीडेटिव स्टेट ऑफ दिस, इन केस ऑफ लैंथेनाइड्स मैं लिखूँ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, इसमें क्या जो बिसाइड्स कॉमन ऑक्सीजन स्टेट ऑफ +3, सम ऑफ द लैंड शो ऑक्सीडेशन ऑफ +2 एंड दिस +4। मगर यहाँ पर जो ऑक्सीजन ऑफ +3 है दिखाता है, दे शो हायर ऑक्सीजन ऑफ +4, +5, +6 एंड +7। lengtheners they have a less tendency towards complex formation, इनमें less tendency है towards complex formation। और जो they have a greater tendency, इनकी लिहाज से इनमें greater tendency। अच्छा, lanthanide compounds they are all, ये सब जो lanthanide compounds से they are less basic and they are more basic, ये ज़्यादा बेसिक है। they do not form oxocations, ये oxocations नहीं बनाते हैं। and they do not form oxocations, example carbon dioxide 2 negative। they are non radioactive, ये है non radioactive, non radioactive except प्रोमिथियम, इसके बगैर ये जो है एक्टिनाइड्स दे आर और रेडियोएक्टिव, सब रेडियोएक्टिव है, रेडियोएक्टिव। ओके, सो दिस वाज अबाउट लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। तो ज़्यादा नहीं है कुछ, तो यही है। तो इसके बाद अब हम हेलो एल्केन्स और हेलो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।